everyone, hope you're all doing well. This is another tarot reading for you. As the title suggests, this reading is about your purpose of your life, your destiny. This is a sun-based reading. Why? Because sun is the natural Atma Karaka, soul significator. It tells the soul's path. So sun sign से बढ़िया जो है पायल सिलेक्शन के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है. So choose your pile through your sun sign. ये जो reading है 4 piles होंगी इस reading में. And yeah, I'll just tell you, अगर आपको नहीं पता है कि आपका सन साइन कौन से, I mean your sun is, you do not know your sun is placed in which sign, then you can even choose from these stones here. So pile number 1 is gonna be your orange stone. So if your sun is placed in the fire sign, in the Agni signs like Aries, Leo, Sagittarius, then you have to choose pile number 1. If your sun is placed in the पृथ्वी साइंस, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2, दिस क्रीम ब्राउन स्टोन. पृथ्वी साइंस यानी कि अर्थ साइंस, यानी कि अगर आपका सन जो है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप इज प्लेस्ड इन द टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, पाइल नंबर 2 इज फॉर यू. देन इफ योर सन इज प्लेस्ड इन द एयर साइंस, वायु साइंस लाइक जेमिनाई, लीब्रा और एक्वेरियस, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3, द पिंक स्टोन. So yeah, if your sun is placed in the signs like Cancer, Scorpio, Pisces, which are the jealous signs, water sign, then you have to choose this clear crystal. It's also very beautiful crystal stone. So yeah, these are your 4 piles, 4 stones. You can choose intuitively, but I would suggest sun sign से ये reading देखना. Sidereal astrology, the Vedic astrology, Vedic birth chart में जो आपका sun है वो कौन सा sign में placed है, उस बेसिस पर ये रीडिंग देखना. एंड हम इंग्लिश में जो है, या आज की मॉडर्न डेज में हम जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. सो इफ़ यू गॉट कन्फ्यूज अबाउट इट, देन वैदिक मतलब साइडेरियल ही है. सो आपका जो वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसमें आपका सन कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है. एंड मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी. उससे पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, देन आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग्स. आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्रा कुंडली रीडिंग. एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्रास आ जाते हैं प्लस टैरो स्प्रेड, और जो आपका नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है उसके अंदर करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, and even there are 2 unique readings on my website. And yes, horoscope matching also. And the 2 unique readings are the Navamsha D9 chart reading and the other is name reading. So in the Navamsha reading, the D9 chart reading, D9 chart represents our heart and soul of main birth horoscope. It's the rasa of main birth horoscope. It tells the soul's dharma, because 9th division hai na, Navamsha. So 9th division is of dharma. So what's your soul's dharma in this lifetime? And it also tells you about your married life and spiritual progress, children. And name reading is again a very unique reading, because our name itself tells us so much about our life. That's why we have this pratha of namkaran in our India. And name actually becomes so important, very very important. Even without looking at the chart, we can predict something from the name itself, because जो हमारा नाम है उसकी जो starting sound है itself, it is connected to some nakshatras and it is activating some part of your life. So throughout वो life का आपका focus ज़रूर रहेगा. So of course we are going to see the chart as well, but you can get all the information about the readings, about the consultations on my website. The link is in the description below. अभी इसका screenshot लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी reading के time. All right? Hello pile number 1. So you chose the orange stone here, and yeah, your sun is placed in the fire sign, Agni signs like Aries, Leo or Sagittarius.
So आपका जो अगर sun है, it is placed in the Aries sign. In Aries we have the nakshatras like Ashwini, Bharani, Kritika. So let's say your sun is placed in the Kritika nakshatra. So Kritika itself is an Agni rule nakshatra, and it shows that you and your father are the people who do the critical analysis, because Kritika, critical. You guys are very critical of everything around you, whether it's like a small little thing or a big thing. You guys are very, very critical, because I'm also saying father because sun represents father. So यहाँ पर आप और आपके फादर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और जब हम किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन को बड़े ध्यान से क्रिटिकली देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनकी कमी कमज़ोरियाँ, उनकी अच्छाइयाँ भी, बट ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान ज़्यादा जाने लग जाता है. सो इट शोज़ दैट समहाउ यू नो कि किसको बुलाना चाहिए किस काम के लिए, बिकॉज यू नो हु इज़ परफेक्ट इन व्हाट. यू गाइज नो कि किस पर्सन को कब बुलाना चाहिए, कौन सा पर्सन आपके कब काम आ सकता है, कौन सा पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा, आप बहुत अच्छे से जज कर लेते हो. एंड बिकॉज यू गाइज डू द क्रिटिकल एनालिसिस. प्लस कृतिका, एज आई टोल्ड, इट्स एन अग्नि रूल नक्षत्र. सो अग्नि पर जो है हमारा खाना पकता है. सो इट कैन इवन हैपन दैट यू एंड योर फादर कैन बी ग्रेट कुक्स. यू guys can cook really well. You know how much salt, pepper should be added in the curry. You know the precision. You guys are also very good in editing pictures, editing videos, or editing a 3-page letter into one single page, and that letter becomes the most powerful letter. You guys are good in these things. Then if your sun is placed in the Leo sign, which is again an Agni sign, we have the nakshatras like Magha, Purva Falguni, Uttar Falguni. And Uttar Falguni is again ruled by sun. It is again ruled by Surya. So let's say your sun is placed in the Uttar Falguni. So it shows that you and your father are great negotiator. You and your father are the people who can be good at counseling, advising, can be good consultants. And it also shows that you and your father would have interest in astrology, occult mysticism, more so astrology में interest रखना. So that is there. Plus this nakshatra is about contracts. You and your father may deal with other people's contract. It can be you can become an HR here who deals with people's contract, or you can even become a lawyer, because a lawyer also deal with contracts of other people. You can even become an astrologer, because an astrologer also deal with other people's karmic contracts. So that's there. And it shows that your father can be a good matchmaker as well, and you in future can even become a very good matchmaker, because marriage is also a contract. It is also a contract. So that's there. And if your sun is placed in the Sagittarius sign, we have the nakshatras like Moola, Purva Ashada, Uttara Ashada. So let's say your sun is placed in the Moola nakshatra. You and your father love to eat things which are grown inside the earth, like potato, ginger, garlic. You and your father are the people who uproot things quite easily. कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है, and suddenly you will be like, let's uproot this. For example, आपने सच में एक एग्रीकल्चरल लैंड पर जो है कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करी. लेट्स से आपने जो है टमाटर जो है, या फिर भिंडी उगाई, लेडी फिंगर, ओकरा उगाया, राइट. तो उसने आपको फ्रूट दिया, यानी उसने आपको रिजल्ट दिया. आपने खूब सारी जो है उससे भिंडी तोड़ी और खाई, राइट. और कुछ टाइम के बाद वो पौधा थोड़ा जो है अब कमज़ोर होने लग गया है, बट वो फिर भी जो है वो फ्रूट दे रहा है, मतलब वेजिटेबल दे रहा है आपको. बट आपने उसको फिर भी अपरूट कर दिया. अभी वो चल रहा था पौधा, पर आपने स्टिल उसे अपरूट कर दिया. वो अभी भी वेजिटेबल फ्रूट दे रहा था, बट आपने उसे स्टिल अपरूट कर दिया. दैट्स द टेंडेंसी ऑफ मूला इन रियल लाइफ एज वेल, इन लाइक फॉर एग्जाम्पल इन कन्वर्सेशन एज वेल. दे विल गो डीप इनटू इट, और आपकी कोई ऐसी गलती निकाल के लेकर आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. इस पर्सन को पता भी है ये मेरे बारे में, एंड दिस पर्सन विल ब्रिंग दैट आउट, एंड यू विल बी लाइक, ओ माई गुडनेस, हाउ डिड you do it? Who told you this about me? So that also happens with Moola. It shows that you and your father definitely get connected or emotionally connected to other people easily, may fall in love with the
anyone easily. That can even happen. But yes, the tendency to uproot things, uproot relationship is definitely there in the Moola. It is. Plus the deity of Moola is Kali, the goddess of destruction. So something like you guys would want to do something constructive, you want to do some construction here, then you are first going to uproot things, you're going to first destroy the area to, again to grow something. So again, because Sagittarius is a fire sign, Agni sign, and it's a Sattvic sign. So you burn to purify, you destruct to construct something new. So that's there. So let's just get started. यहाँ पर आपका पर्पस क्या है? पाइल नंबर 1 का पर्पस क्या है लाइफ का? Okay, we have Queen of Swords, we have 4 of Wands, and I mean, I see that somehow your purpose is actually to get married or to start a business. And here we have the Emperor. I was talking about business. Here we have the Emperor, who is very practical, do the analysis, and Queen of Swords itself is a very independent energy. Then we have Ace of Wands, following the passion. First of all, this card, ये जो 4 of Wands का card है, it's the card of a mandap, it's a card of marriage and celebration. What I see is that your purpose of life and your destiny is to first, you to get married. If you think that you are never going to marry, if you think that कि मेरी marriage कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि मुझे कोई person पसंद ही नहीं आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, then you are very wrong. The thing is that you are destined to get married. You have to deal with the marriage contract in this lifetime, even if you don't want to. Then also you have to. Especially Sun in the Uttar Phalguni itself is or even Purva Phalguni even. These 2 nakshatras are about contracts. Marriage contract, business contract. You have already promised someone in your past life that, you know what, in the next life I'm going to marry you. And here as well we have 4 of Wands, which is about marriage, which is about that unionship, which is about that marriage contract. So you have to bind yourself in that marriage contract to actually fulfill your soul's dharma, to actually fulfill your dharma, your soul's path, your soul's destiny. You have to fulfill that, and you will fulfill it. Then we have Queen of Swords. Queen of Swords is the energy of being cutthroat, a very independent energy. And of course we have the Emperor as well here. I would say that here you are destined to be independent in your life. You can even own your business here. It's not really about the jobs, it's about the business. It can even be a cooking business or being a chef, because we have the nakshatra like Kritika in Aries. Kritika represents sharp object like a sword, and a king and an emperor also have a sword. So it's about cutting, piercing and penetrating deep into something. So यहाँ पर भी जो है आपकी destiny, आपका एक तरह से soul का purpose is actually to also, some of you can even become great chefs here, can open their own restaurant. That can even happen here. But yes, whatever your job is going to be, whatever your karma is going to be, it's to cut and penetrate into things, is to cut and penetrate into something to get the truth out. You can even become a great lawyer with such cards here. But yes, the soul's purpose, the destiny is to cut and penetrate, and उससे जो है, जो आप cut और penetrate करा, उससे सच बाहर निकलना. So it is also related to that. Your purpose, your destiny is also related to it. Marriage, opening your own business, becoming the boss, becoming the CEO, becoming the manager, and also like cut to cut communication. It's not ki arey aap kaise ho, how is your day going? No, it's not about it. It's straight to the work, to the point baat karna kisi se. That is Queen of Swords, and you are going to do that. When you are in your Karam Kshetra, when you are at your work, you're going to be cutthroat. You're going to be straight to the point that, you know what, you have to do this, you have to do this, then you have to do this, and then you can go. And then we have Ace of Wands, which is again, Wands की जो energy, it's the action oriented energy. Wands की energy, Agni की energy है, fire energy, and here we also have the fire. So it's about your creative avenues, it's about your creative things, and it's about creative चीज़ों में जैसे arts, media,
पेंटिंग, ब्यूटी, लग्जरीज, व्हीकल, जो चीज़ें क्रिएटिव हैं या जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है करना, क्रिएटिव चीज़ें हैं, आपको इस लाइफ में वो करनी है और उससे आप यहाँ पर अर्न करोगे। इस लाइफ टाइम में आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव एवेन्यूज, क्रिएटिव चीज़ों से आ रही है और इन्हीं क्रिएटिव चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो। तो अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा अपने अंदर बनाए रखना, क्योंकि यही क्रिएटिविटी आपको अपनी लाइफ में काफ़ी आगे लेकर जाने वाली है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इन क्रिएटिव चीज़ों को लेकर ये जो आपके लाइफ के यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट समथिंग इन योर लाइफ बिकॉज वी हैव वांट, सो यू आर पैशनेट पाइल नंबर 1 अबाउट समथिंग। तो उस पैशन को सिर्फ ये नहीं कहना कि अरे मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ को करने के लिए और मैं करना चाहता हूँ। नो, इन्वेस्ट योर टाइम इन इट, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन इट। You have to invest your time and energy into your creative passion, because that's really important to really build a career from that passion. So that is something which I'm seeing here. यहाँ पर मेजर आर्काना से आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी सोल की डेस्टिनीज, योर लाइफ पर्पस. All right, so we have the Hermit card. Hermit itself shows the Virgo sign, the 6th house, and of course in tarot we say and here as well we have Rishi. So in tarot we say कि Hermit show करता है हमारे just taking a break and being alone, being near nature. But the Hermit also have the other meaning of doing something which is unorthodox, because this Hermit also shows the nakshatras like Ardra, your moon, your Atmakarika, or any other planet can be in the nakshatra of Ardra. And Ardra is the nakshatra of Rudra, which is a very chaotic deity. It's not really a happy-go-lucky energy. It's a very chaotic energy, and it shows that you have to do something which is unorthodox. You can be rejected many a times via your bosses or the authorities in your life, and your father can even reject your ideas. मतलब आपके फादर आपको शायद सपोर्ट ना करे अपने क्रिएटिव चीज़ों में, ऐसा यहाँ हो सकता है. बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास वो टैलेंट है, वो पैशन है, वो एक जो उस पैशन से कैसे मनी अर्न करा जाए वो आपको पता है. बिकॉज अगेन हर्मिट शोज द 6th हाउस ऑफ वर्गो विच इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, विच इज ऑल अबाउट जॉब, सर्विसेज एंड इवन लॉ से रिलेटेड चीज़ें, बीइंग अ लॉयर, दैट इज अगेन the Virgo sign, because Virgo is about giving services to other people. So you can do something related to the service sector, but yes, the purpose of your life is to do something which is unorthodox. People are gonna reject your ideas early on. You will get rejections early on in your life. बट यहाँ पर जो है उन रिजेक्शन से आप काफ़ी कुछ सीखोगे और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. आई कैन नॉट रियली सी कि आप जो हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल. आई कैन नॉट रियली से दैट बाय लुकिंग एट दीज कार्ड्स. मे बी जो आगे कार्ड है उसमें कुछ पता लगे, बट अभी तक तो आप एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन नज़र आ रहे हो जो एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और उस पर चलते हैं. आई कैन नॉट रियली से कि हाँ इंटुइशन काम आ रही है ऐसा है वैसा. नो, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट बीइंग कट थ्रोट, इट्स ऑल अबाउट बीइंग following one's passion but with practicality. So that is something which I see. Yes, Hermit card do show rest and rejuvenation, but again it's also the card of work. So यहाँ पर आप काम हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, लॉन्ग आवर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हो. रोज़ आपको सुबह उठ के इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा इन योर लाइफ एट योर वर्क. सो आप छुट्टी, आप ब्रेक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं ले सकोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है. सो लेट मी जस्ट पुल फ्यू कार्ड्स फॉर यू, सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू. फाइल नंबर 1 की जो फाइल नंबर 1 का पर्पस है, डेस्टिनी है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. All right, so we have the love card here. Again, as I've told you, we have 4 of wands and then we have this love card. You already somehow
promised someone in your past life that you're going to marry them, and you're in this lifetime you're going to fulfill that promise. So that is something which I see here. And don't worry, you're going to be in love. And we have the finding card. You are going to find yourself in this life. You are going to find your purpose. If you feel कि मुझे पता नहीं लग रहा मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, I feel directionless, तो आप जो हो अपना लाइफ का पर्पस, अपना पाथ है वो ढूंढ ही लोगे जल्दी. And because we also have the love card, so and here we have Ace of Wands, somehow you again, ये जो रीडिंग है ये आपको क्लैरिटी ये देना चाहती है कि आपने जो है वो काम करना है, वो करियर चूज़ करना है जो आप लॉन्ग टाइम तक कर सको, लंबे समय तक कर सको. और ऐसा करियर आपने अपने लिए पिक करना है, ऐसा पाथ अपने लिए पिक करना है जो कि आपको एक CEO या मैनेजर या अपना बिजनेस बनाने में हेल्प करे. एंड यू शुड बी पैशनेट अबाउट वॉट यू डू. आप कल को ये नहीं कहो कि मुझे तो मेरा काम पसंद ही नहीं, आई हेट माई जॉब, आई हेट माई बिजनेस, आई हेट माई वर्क. ये चीज़ें ना हो. आपने एक ऐसा करियर अपने लिए पिक करना है, चूज़ करना है जो आपको खुशी दे, जो आप हमेशा उस चीज़ के लिए पैशनेट रहो. सो ऐसा आपने करियर अपने लिए पिक करना है. आप अपना जो पाथ है वो जल्दी ढूंढ लोगे. डू नॉट वरी अबाउट दैट, जल्दी ढूंढ लोगे. Then we have spirit guides here. I mean the spirits are guiding you here. आपके ऊपर spirits, your spirit guardians are like they are going to guide you. उनकी छत्र छाया आप पर है. So do not worry about that too. But I do see कि जो काम आपको पसंद है, जिस काम से आप बहुत प्यार करते हो, उस काम को जो है आप करो. जिस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उस काम को यहाँ पर आपने करना है. अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो कि यही काम करना है. Don't do that. Don't do that. बिकॉज लाइफ में आपके लिए जो है वो प्रोग्रेस या वो जो सक्सेस है वो तभी आ पाएगी जब आप अपने काम से, अपने कर्मा से जो आपका करियर है उससे प्यार करने लगोगे. बिकॉज इन द वर्ल्ड देयर आर सो मैनी पीपल हु हेट देयर जॉब्स एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम. You are not one of them. I can see from the Hermit card that it can happen early on in life. आप कोई ऐसा बिजनेस, ऐसी जॉब अपने लिए चूज़ करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके बाद आप थोड़ा आइसोलेशन में चले जाओ. एंड देन यू रियलाइज व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. ऑफ कोर्स कहने में बहुत ईजी है, करने में मुश्किल है, वक्त लगता है, पर आप वो वक्त भी लगाने को यहाँ पर तैयार हो जाओगे. बट फर्स्ट आई फील दैट यू हैव टू गो थ्रू ए जॉब, an experience where you are going to feel that I do not belong here, and then only you're going to find your real purpose, your true career. So this is something which I'm seeing here. यहाँ पर और क्या information है? Guidance. Alright, so we have Heart Guardian, love and let yourself be loved. अभी यहाँ पर ये लव कार्ड भी आया हुआ है. देन वी हैव हार्ट गार्डियन, जो आपका मन करता है, जो आपके मन ने कहा है कि ये काम करना है, वो काम आप यहाँ पर करो. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. अपने मन को मारो मत. जो आपका मन कहता है वो करो. जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो वो काम करो. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके सोल पर्पस, सोल की डेस्टिनी से रिलेटेड? All right, this card wants to come out. So we have childhood, innocence. Again, कहीं ना कहीं जब in your childhood you must have thought something कि बड़े होके मैं ये बनूंगा और इस चीज़ के लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करूँगा ये बनने के लिए. तो उस चीज़ को भी जो है आप ध्यान में रखो यहाँ पर. और एक और चीज़, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, तो अपना बचपन याद करो. आप बचपन में कौन सी चीज़ को करके बहुत ज़्यादा खुश होते थे? क्योंकि कोई ना कोई तो हॉबी होगी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई आर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कुछ और हो. बट जो आपको चाइल्डहुड में खुशी देती थी चीज़, उसको ज़रूर याद करो, क्योंकि वो याद आपको कहीं ना कहीं अपना जो सोल पर्पस है वो ढूंढने में मदद करेगी. वी ऑल्सो हैव द फॉग कार्ड विच इज़ व्हील्ड. सो
इट शोज़ कि फॉग जो है, यानी अगर फॉग हो जाए, धुंध हो जाए, तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, राइट। तो यहाँ पर भी जो है आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आपको अपना रास्ता नहीं पता लग रहा है। करंट मोमेंट जो है आपका वो ये है कि आपको अपना रास्ता नहीं पता लग रहा है, एंड दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली ओके, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपको अपना रास्ता जल्दी ही मिल जाएगा. Don't worry about it. But yes, this fog card also shows that your sun can actually be eclipsed here. राहु केतु को eclipse होगा सन पर या मून पर होगा, which can even give you psychological issues in your life. Rahu Ketu in the 4-10 axis can even give you psychological issues in your life. 1-7 axis can even give you psychological issues in your life, because Rahu is that malevolent energy which will be like an illusion. फॉग जैसे, धुंध जैसे, क्योंकि धुंध में हमें कुछ दिखता नहीं, फॉग जो होती है हमें कुछ दिखता नहीं है. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आई फील दैट योर एनर्जी, यू योर सेल्फ आर काइंड ऑफ लॉस्ट in the world, that what to do, what not to do, what is going to give me success. ये सवाल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. और असल में आपका जो जवाब है वो आपको अपने चाइल्डहुड में मिलेगा, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में मिलेगा. तो वहाँ जाकर पता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आंसर आपके पास या बाहर नहीं है, आंसर आपके पास ही है. और यहाँ पर जो है ये क्लैरिटी आपके पास जल्दी ही आएगी. बट फर्स्ट यू हैव टू रीविजिट योर चाइल्डहुड, फर्स्ट यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट कि आपने बचपन में क्या करा था, क्या आपकी हॉबीज़ रही थी, क्या करते थे आप, किस चीज़ को लेकर आप खुश होते थे. क्योंकि यहाँ पर जो है आप वही काम करोगे जो आपका मन जिसमें लगेगा. आप अपने मन को मार के कोई काम नहीं कर सकते हो. पाइल नंबर 1. कुछ और गाइडेंस भी हम ले लेते हैं आपके लिए इस oracle deck से. So we have broken arrow, embrace the energy of peace. Again the thing is, कुछ चीज़ें यहाँ पर टूटी ज़रूर है आपकी लाइफ में. somehow आप किसी ऐसी जॉब में पहले आ सकते हो जो जॉब आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई ना करे, कहीं ना कहीं आपका मन ही ना लगे उस जॉब में. that can even happen, and then you realize कि I'm not on the right path, I should do something different in my life, and then you realize really your true purpose, your soul purpose. But first you have to fall, और गिरने के बाद जब आप फिर उठोगे, गिरने के बाद आप फिर जब राइज करोगे, आप जो हो काफ़ी आगे अपनी लाइफ में निकलोगे. कि जो भी आप काम करोगे, जो भी आपका कर्मा होगा, वो जो होगा आपको हमेशा फुलफिल्ड रखेगा इमोशनली. योर वर्क इज़, और आई शुड से कि जो वर्क है, जो कर्मा है, आपका जो करियर है, वो आपकी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, वो आपके इमोशन से कनेक्टेड है. अगर आप खुश नहीं हो उस काम को करके तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे, और अगर आप खुश हो उस काम को करके तो आप थ्रू आउट लाइफ उस काम को आराम से कर पाओगे. सो आई फील दैट सम ऑफ यू आर एक्चुअली क्वाइट मूडी एट वर्क. अगर कोई काम पसंद आ जाता है तो ही उसको करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो. मन मार के आपसे काम नहीं होता है. This is something which I'm seeing. In your soul's path, your soul's destiny is to work or is to get work जो आपको खुश करे, जो आपके क्रिएटिव पैशन, क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड हो. That is something which I'm seeing here for you. So follow your heart. That's important. And even marriage is kind of important for you, pile number 1. Even if like you were thinking कि मेरी मैरिज कभी हो ही नहीं पाएगी, I'm 35, I'm 37. No, actually you are destined to get married. Yes, late marriage हो सकती है, पर मैरिज है, it is there. That is also one of the part of your destiny, we can say. तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है, पाइल नंबर 1. Alright, so this was the reading for you. I hope I gave you some clarity here about your life. जो आपके मन में चीज़ें चल रही थी, एटलीस्ट कुछ यहाँ पर जो मुश्किलें आपकी लाइफ में थी, अनक्लियर चीज़ें थी, वो क्लियर हुई हो. So like this is one of my purpose to do this reading, and I hope I fulfilled my purpose by giving you clarity about your purpose. So yes, that was it, pile number 1. Do let me know in the comment section what do you think about this pile and how it resonates with you. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the cream stone here, and your sun is placed in the signs like Taurus, Virgo or Capricorn. These are the earth sign, the Prithvi signs. So
let's say your sun is placed in the Taurus sign. And in Taurus, we have the nakshatras like Kritika, Rohini, Mrigasira. So let's say your sun is placed in the Rohini sign, in the Rohini nakshatra. So sun in Rohini definitely shows that you and your father, because sun represents the father. So आपका जो सोल है, आपका जो सोल का पाथ है, वो कहीं ना कहीं आपके फादर से मैच करता है. आपके फादर की नेचर आपसे मैच करती है, आपकी नेचर आपके फादर से मैच करती है. ऑफ कोर्स अगर हम जो हैं हमारे बायोलॉजी से देखें तो ऑफ कोर्स हमारे पास हमारे फादर का डीएनए है, तो कुछ कुछ आदतें अपने फादर से भी मिलती है. इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल सन और मून हमारे फादर और मदर हैं, इल्यूमिनरीज हैं. तो यहाँ पर सन जो है आपके फादर के बारे में भी कुछ ना कुछ बताएगा, आपके बारे में भी कुछ ना कुछ बताएगा. सन प्लेसमेंट. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Rohini. You and your father are the people who loves to be in luxuries, who love to have a big home and a luxurious vehicle. You guys love music as well. Music is like life. And you guys can also have very beautiful eyes, or you try to enhance your eyes by wearing contact lenses or doing more eye makeup. And it shows that there is this, love for luxury, like being in the 5-star 10-star resort hotel. You guys love this, and luxury becomes very important for you. And why music? Because this is a Naga rule nakshatras, and Naga जो है पहले के टाइम पर there were snake charmers जो कि ऐसे बीन बजाते थे और नाग जो होते थे वो डांस करते थे. So again, because it's a Naga rule nakshatra, so music comes into play. And even singing, not just instrumental but singing, you can be interested into this as well. And yes, this nakshatra is all about enjoyment. Those people जो 70 या 80 की एज में भी बहुत लग्जरी में जीना पसंद करते हैं. whereas ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं. बट मोर अगर आपने देखा हो, you would have seen this in Bollywood or other places on social media or internet, that there are few people who are actually interested into more luxury as they grow old. They want to buy Rolls Royce when they when they are in their 60s, 70s. They want that luxury in their life, so they get it. And especially Rohini Nakshatra is like that, who will make you have luxuries in your life. You will work so that you have a luxurious lifestyle. Some people work because they want to have, they want to provide for the family, whereas you and your father will work so that you guys can afford luxuries. तो ये चीज़ है. If your sun is placed in the sign of your Virgo, तो Virgo में we have Uttar Falguni, Hasta and Chitra. Let's say your sun is placed in the nakshatra of Hasta. You and your father can be very good in skills of hands. You and your father has skills of hands. You and your father have skills of hands, like you guys can fix things at home, your father can fix things at home, या फिर you guys can be creative with your hands, maybe painting, sewing, something. And especially when it comes to male, when it comes to father can be quite technical with the hands, whereas if you're a female watching this reading, your sun is in Hasta, you can be into painting or into sewing, because जो male है, जो masculine energy, वो थोड़ी technical होती है as compared to female naturally. But yes, there are going to be females also who can be mechanics, who can be very technical in nature, but more so feminine energy जो होती है, it is all about painting, designing, creativity. So you can do these things, creative things from your hands. And if there is impact like Rahu over this sun, then of course sun is eclipsed, but it shows that your father and you can be very good in teen patti, poker, blackjack. That can even happen with this. And yes, you and your father will also take long showers, long bath, because the nakshatra animal of Hasta is a water buffalo. Let's say your sun is placed in the sign of Capricorn, because Capricorn again is an earth sign, Prithvi sign. So in the Prithvi sign Capricorn, we have the nakshatras like your Uttara Ashada, Saravan and Dhanishta. So let's say your sun is placed in the Sravan nakshatra. You and your father actually can learn more or learn better when you listen. The thing is कि कुछ लोग होते हैं जो लिख कर उनको याद होता है, आप ऐसे लोग हो जिनको सुनकर याद होता है. There are going to be people
वो आर गोना से कि हमने यूट्यूब से सीखा है, हम स्क्रॉल कर रहे थे और यूट्यूब पर ये वीडियो आई, हमने उसको सुना और हमने वैसा वैसा करना शुरू कर दिया. वी लर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूब. अगेन यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग ऑफ कोर्स एंड यू आर ऑल्सो लिसनिंग एंड यू रिमेंबर दैट थिंग. सो इवन जब आप अगर एजुकेशन में हो, अगर आप ऑडियो बुक्स से पढ़ते हो, सुनते हो, आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा. बिकॉज श्रावण इज द नक्षत्र ऑफ एडवाइजिंग एंड हियरिंग. It's the symbolism of Shravan is also an ear. Again, I cannot go deep into it, but yes, this is the nakshatra of counseling as well, consulting as well. Even your father can become great consultant. Your father can be a consultant, is an advisor, great advisor. You and your father are quite youthful in your looks. No matter what the age is, you guys look younger than your age. So let's just get started. यहाँ पर जो है टेरो क्या गाइड कर रहा है फॉर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ के पर्पस के बारे में. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू एंड गिव्स यू मोर क्लैरिटी. जो पाइल नंबर 2 है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या डेस्टिनी है. ऑल राइट, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स. आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाओगे, दैट कैन बी सीन, क्योंकि आप जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते हो. देन आई सी 5 ऑफ पेंटिकल्स. अकेले चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. आप इस दुनिया में अकेले हो, अकेले आए थे, अकेले जाना है. इस रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. 5 ऑफ कप्स. अगेन द थिंग इज कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे, बट उन अचीवमेंट से आप जल्दी खुश नहीं होते. आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बहुत हाई है. अपने से खुद की खुद से जो है बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी. देन वी हैव द डेथ कार्ड विच इज़ अगेन कि अच्छा भला काम चल रहा था, उसको अप्रूट कर दिया. इट कैन इवन हैपन दैट योर मून, योर आत्मा कारका कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ मूला विच इज़ अबाउट रूट्स, अप्रूटिंग थिंग्स. आई विल कम बैक टू दिस कार्ड, बट फर्स्ट जो ये 8 ऑफ कप्स है, इट इज शोइंग कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके होगे, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड. द थिंग इज कि यू कैन बी द ओल्ड सोल हेयर. आपकी सोल ने काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स जी है यानी लिव करी है. उन लाइफ टाइम्स में आपने काफ़ी कुछ अचीव करा था, और अब इस लाइफ टाइम की जो अचीवमेंट्स है इतनी बड़ी नहीं है जितनी पहले की लाइफ टाइम्स की अचीवमेंट्स थी. इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. देन जो ये 5 ऑफ पेनिकल्स है, इट इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं कोल्ड शोल्डर मिलना दूसरे लोगों से, मे बी कुलीग से, मे बी फ्रेंड से, मे बी कज़न से, मे बी पेरेंट्स से. कोल्ड शोल्डर मिलना, आपके आइडिया को रिस्पेक्ट ना मिलना, आपके आइडिया को हवा में मजाक में उड़ा देना. एंड यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. नोबडी विल help you in this. You are alone in this world. We all came alone. That is true, right? That is true. हमारे साथी कई बन जाते हैं इस लाइफ टाइम में, जैसे हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, वो हमारे साथी बन जाते हैं, या लाइफ पार्टनर हमारे एक साथी बन जाते हैं, तभी हम उनको लाइफ पार्टनर कहते हैं, हमारा साथी वो हो जाता है. बट यहाँ पर आपको ये चीज़ अपने मन में जो है बिठानी चाहिए, दैट यू नो व्हाट, आई एम alone here. I have to do things alone. I have to do my things alone. Nobody is going to help me here. I will help myself. There is one God who is going to help me, because वो तो करण करावनहार है. और अगर मैं अपना एक स्टेप लेता हूँ सक्सेस की तरफ, और मैं उस स्टेप को जो है भगवान को याद करके लेता हूँ, तो भगवान उस जो कार्य है, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जुड़ गए मेरे साथ. अब उनको भी जो है इस काम में हाथ जो है बटाना पड़ेगा, हाथ मेरा हाथ थामना पड़ेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज, आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट स्पिरिचुअल पाइल नंबर 2, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द डेथ कार्ड. डेथ शोज एंडिंग्स, राइट? एंडिंग्स, बट ऑल्सो रीबर्थ. सो अगेन द थिंग इज कि आप ऐसे सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजरोगे जहाँ पर लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे. दैट विल बी ऑफकोर्स, वो हार्ट ब्रेकिंग होगा, वो फेज हार्ट ब्रेकिंग होगा, पर आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा अपनी लाइफ में, पे ऑफ करेगा. बट येस, देयर विल बी पीपल हु आर गोना लीव यू. एंड आई ऑल्सो फील दैट यू शुड नॉट डू बिजनेस पार्टनरशिप. आई नो दिस इज जनरल रीडिंग, बट ये जो कार्ड आए हैं, आई फील कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, मे बी दे बैक स्टैब यू. दैट कैन हैपन हियर.
तो आई विल रियली सजेस्ट जो भी आप काम कर रहे हो अकेले करना, अपने दमों पर करना, पार्टनरशिप में नहीं. डोंट डू दैट. एंड 5 ऑफ कप्स हियर इज शोइंग अगेन कि आप जो हो काफ़ी अगेन जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसको लेकर उदास होते हो, जो चीज़ें आपके पास है उससे खुश नहीं हो. सेम वही 8 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन की काफ़ी कुछ अचीव कर लिया बट यू आर लाइक या आई अचीव्ड दिस, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या है, ये आपके मन में हमेशा रहेगी कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए. ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा रहता है. इस वजह से आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे. आप एक अचीवमेंट के बाद रुकते नहीं या उसको सेलिब्रेट नहीं करते हो. एंड अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ज़िंदगी 4 दिन की है, कब ख़त्म हो जाए पता भी नहीं लगेगा. सो हर मोमेंट को जो है एंजॉय करना सीखना है और मोमेंट में जीना है. Live in the moment, live in the present, not in the past, not in the future. The life is in the moment, life is in the present. So present में जीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पाइल नंबर 2, because I feel डेथ है जो हो चुका, एंडिंग हो चुकी. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कई बार तो बहुत ही पास्ट की सोचने लग जाते हो, पास्ट में क्या हुआ था मेरे साथ, और कई बार बहुत आगे की फ्यूचर की सोचने लग जाते हो. बीच का यानी प्रेजेंट आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, जो कि अच्छा नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है. आपने अपने प्रेजेंट में ज़रूर ध्यान देना है. पाइल नंबर 2, दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. यहाँ पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द मेजर आर्काना, आपके सोल के पर्पस के बारे में, डेस्टिनी के बारे में. आई फील दैट यू आर काइंड ऑफ डेस्टाइन्ड टू बी डिससैटिस्फाइड बाय योर ओन एफर्ट्स. पर इस चीज़ को चेंज करना है. एफर्ट लगेगा इस चीज़ को चेंज करने के लिए, बट चेंज करना है. देन वी हैव द हेरोफेंट. सो यहाँ पर जो है हेरोफेंट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, एट द सेम टाइम बीइंग रिबेलियस बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स वेज. सो आई सी कि आपको जो है इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है. ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ पर नहीं आपने चलना है, इनोवेशन अपने अंदर लेकर आनी है. एंड हेरोफेंट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर एज वेल. सैटर्न इज डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर. ये अपनी लाइफ में लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पर्पस तक रीच करने के, अपने पर्पस तक रीच करने को. So, I mean, you have to be disciplined, organized and structured to reach your goal. That is important. और एक और चीज़, one step at a time is also important for you to reach your goal. One step at a time. यहाँ पर और क्या information आ रही है आपके soul के path के बारे में, soul's destiny, your destiny. So we have the protection here. All right. Being a mother, being a motherly figure in someone's life. Then we have justice. Again, अगर आपने देखा हो, Saturn get exalted in the sign of Libra and Libra itself is the sign of justice. Itself Libra का symbolism is a scale, right? Scales है. Then we have family. What I feel is that your destiny, if you were thinking कि you know what, I'm never gonna get married, मेरी तो किस्मत में है ही नहीं marriage, then you are very wrong. Even in pile number 1, marriage kind of card came. So here as well, pile number 2, you're destined to get married, especially with this justice card, because justice shows here the 7th house of marriage, love, relationship, Libra sign. So it definitely shows, again Libra is about marriage contract, business contract even. So it shows कि यहाँ पर आपकी marriage एक ऐसे person से होगी जो काफ़ी एक family oriented person होंगे. एम्बिशियस पर्सन इतने नहीं कहूँगी जितने फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. फैमिली के लिए कुछ भी ये पर्सन कर सकते हैं. आपके स्पाउस अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जो आप फैमिली क्रिएट करोगे उस फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हैं. और कई बार हम कई बार देखते हैं कि हमारे खुद के फादर या फिर किसी और के फादर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस हैं. रीज़न ये होता है ज़्यादातर वो और अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं. That happens. But in your case, your spouse is going to be a person जो काफ़ी ज़्यादा family oriented होने वाला है. What I see is that you are the one who is over ambitious. You are the one who is actually over ambitious, who wants to achieve more and more in their life. You will even travel a lot in your life. You will travel a lot, especially if your sun, moon, Atma Karaka, Lagna or Arudha is in the Saravan Nakshatra.
you will move from one place to other. Even in Punarvasu Nakshatra, one definitely travels, but in Saravan, wo to guaranteed hai, because Saravan is about 3 steps, going to 3 different lands, having 3 different residents. So it shows that pile number 2, you are actually destined to be over ambitious in your life. You can be over ambitious, you can be an overachiever here. और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करना चाहते हो, यू वांट टू बी दिस इंडिपेंडेंट एनर्जी, यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए एफर्ट आप हमेशा करते रहोगे. अगर आपको कोई कहता है कि यू गॉट मैरिड नाउ सो यू शुड जस्ट सेटल डाउन एंड, या ऐसे अगर कोई कहता है, देन यू विल डेफिनेटली विल गेट इरिटेटेड एंड यू विल गो आउट इन द वर्ल्ड टू वर्क फॉर श्योर. पाइल नंबर 2, आपको कोई रोक नहीं सकता बाहर जाके काम करने से. आप अपनी लाइफ में जो हो बहुत आगे जाओगे इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि आप जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होते. यू विल ट्रैवल इवन द वर्ल्ड टू यू नो फॉर योर करियर, टू अचीव थिंग्स इन योर लाइफ. और इवन बिकॉज आज की डेट में वर्ल्ड हमारे हाथ में, जिसको हम फ़ोन कहते हैं, राइट, फ़ोन, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है उसके अंदर वाईफाई है, वाईफाई से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, कितने सारे लोगों से जुड़ सकते हैं एक ही जगह पर बैठे बैठे. सो इट कैन इवन हैपन दैट यू डू सम बिजनेस और यू डू अ जॉब, जिस जॉब की वजह से, जिस बिजनेस की वजह से आप दुनिया में जो किसी भी कोने में कोई भी पर्सन बैठा है उससे कनेक्ट हो सकते हो. सो यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ with the world here. Even if you are not traveling, then also you're gonna connect yourself to the world, और वहाँ से आपको business आना. And justice card again shows the business partnership, but because we have the death card here, I won't say that you should do business partnership. You should do your business alone, या फिर अपने spouse के साथ business करना. But I will not say कि यहाँ पर अलग ही कोई business partner बनाओ, because that may not be the best decision of your life. तो ये चीज़ है. यहाँ पर जो है आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या और इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के पर्पस के बारे में, डेस्टिनी के बारे में. All right, we have Knight. Be brave and honest. Honesty is the best policy for you, pile number 2. You have to be honest with your own self कि मुझे चाहिए तो चाहिए क्या. आप दूसरों की खुशी से जो हो अपनी खुशी सेक्रीफाइस, दूसरों की खुशी की वजह से अपनी खुशी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली की खुशी के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर देते हैं. whereas you are not really like this. You will not really sacrifice your dreams on the behalf of your family. You are not going to do that. You are going to be honest with your spouse that, you know what, I want to do this. I really, really want to do this. I desire to do this thing. And your spouse will again respect that decision of yours. He or she will respect your decision about, you know, you traveling the world or you working, even when you have kids, when you have a lot of responsibilities, still you are going to work. It becomes a big part of your life. You're not going to stop working. You're always going to work. So ये कार्ड निकल रहा है बाहर. So we have the waterfall, effortless. I also feel that you are gonna gain money effortlessly in your life. At times you will feel that कि आप काफ़ी ज़्यादा lucky हो when it comes to gaining more income, getting more money. You are gonna feel quite fortunate कि आपके पास ये money आ रहा है, वो भी effortlessly आपकी तरफ ये money आ रहा है. जैसे waterfall जो है, यहाँ पर कैसे फ्लो से वाटर आ रहा है, और वाटर जो है वो मून की एनर्जी है, बिकॉज मून रूल द कैंसर साइन विच इज़ अ वाटर साइन हियर. सो मून इज एक्चुअली द सिग्निफिकेटर ऑफ मनी. तभी हम कहते हैं लिक्विड मनी, राइट. तो यहाँ पर जो है वो मनी आपके पास जो है आ रहा है, वो भी एफर्टलेसली कई बार आता है. यू आर क्वाइट फॉर्चुनेट इन दैट. यू विल ऑलवेज हैव द सस्टेनेंस. मनी आपके पास हमेशा होगा अपनी लाइफ में. Then we have volcano. So यहाँ पर जो है इस volcano card में भी we have the like volcano eruption, right? तो यहाँ पर भी जो है I feel that there is going to be anger inside you. There is definite anger inside you जो निकल आता है बाहर. It can happen that you have the conjunction or mutual aspect of Mars and Moon. Moon represents our mind, our emotions, and Mars is that fire, passion, aggression, sharp object which is puncturing the moon, the peace of mind. So actually anger can come अगर कोई you know the person is beating around the bush, वो मेन बात पर आ ही नहीं रहा है. So you guys can get easily
angry or frustrated and will say, please come to the point, come direct, straight to the point, just don't beat around the bush, come to the point. So that quick thing is also inside you. आप quick चीज़ें चाहते हो, पर again कई बार वो नहीं मिलती, and then that frustration, anger can even come. But yes, money will be there. You should not be लाइक कि पता नहीं मनी आएगा मेरे पास या नहीं आएगा, मेरे पास सस्टेनेंस होगी या नहीं होगी. नो, यू नेवर विल बी पेनीलेस. यू विल ऑलवेज हैव द सस्टेनेंस नो मैटर व्हाट. पाइल नंबर 2. सो आई मीन अगेन यहाँ पर भगवान की छत्र छाया है. खाने को तो आपके पास हमेशा होगा. यू विल नेवर बी पेनीलेस. सो देन वी हैव मिरर गार्डियन. एंड द थिंग इज दैट यहाँ पर जो है, बिकॉज यू आर एन ओवर अचीवर, अगर आपने कुछ अचीव नहीं करा तो एकदम से आप नेगेटिव सोचने भी लग जाते हो, जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि मेरे पास मनी होगा ना. एक भी दिन अगर आपका थोड़ा ऐसा चला जाता है जहाँ पर आपको इतना गेन नहीं होता, उसी टाइम आपके मन में थॉट्स आने लग जाते हैं कि पता नहीं कि कल कैसा रहेगा बिजनेस या जॉब कैसी रहेगी, मनी आएगा कि नहीं आएगा. बहुत ज़्यादा फिर वो नेगेटिव चीज़ों में आप चले जाते हो. यहाँ पर टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. Mirror guardian, you have to reflect back as well, pile number 2, because again the thing is कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किधर से आए थे और कहाँ पर पहुँच गए हो. अपनी अचीवमेंट्स को आपको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, जो कि आप नहीं करते हो. आप नेक्स्ट क्या, अब क्या, ये चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो. एंड समहाउ दिस इज़ ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी टू थिंक दिस वे. और डेस्टिनी बदलना कोई मासी का घर तो है नहीं कि बहुत आराम से हम डेस्टिनी बदल लेंगे. बहुत एफर्ट लगता है चीज़ें बदलने के लिए. मैनिफेस्टेशन में कितना एफर्ट लगता है. बट व्हाट आई सी, पाइल नंबर 2, यू गाइज आर द ओवर अचीवर्स. हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन सेल्फ, दैट बिकम्स वन ऑफ द रीज़न जहाँ पर आपको जो है अच्छा नहीं लगता जब आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हो. सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 2. चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं. यहाँ पर मनी जो है आपके तरफ एफर्टलेसली आना शुरू हो जाएगा. येस, शुरू में एफर्ट लग सकता है, पर बाद में चीज़ें एफर्टलेस हो जाएगी. बट येस, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आई वॉन्ट दिस एंड आई ओनली वॉन्ट दिस, आई डू नॉट वॉन्ट दैट. यू हैव टू बी ऑनेस्ट and take time to reflect back, take time for your own self, give time to your family. That's also very important. I mean, ये जो aspect है ये भी आपके life के part है, तो इसको भी अच्छे से निभाना है. So this is something which I'm getting for you, pile number 2. The life's destiny or life purpose is to actually work tirelessly. कहीं ना कहीं आप रुकना पसंद नहीं करते हो, pile number 2. आपकी जो एक तरह से purpose है, it's always about moving on in life. अब क्या next क्या, ये चीज़ें आपके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अब मुझे next क्या करना चाहिए. So this is something which is coming for you, and this is somehow your purpose to do more and more thing, and you are going to achieve a lot of things in your life, a lot of things. जितना एक normal person नहीं achieve कर सकता, उससे ज़्यादा आप achieve करोगे, काफ़ी ज़्यादा achieve करोगे अपनी life में. So ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है, pile number 2. All right. So do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about this pile? And I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the pink stone here. And let's just get started. आपने जो है ये pink stone से choose किया या फिर आपका जो sun है, it is placed in the वायु signs, air signs like Gemini, Libra or Aquarius. So यहाँ पर जो है, let's say your sun is placed in the Gemini sign, and in Gemini sign we have the nakshatras like Mrigasira, Ardra, and we have the nakshatra of Punarvasu. So let's say your sun is present in the nakshatra of Punarvasu. So Punarvasu is like the story of Shri Ram. Like it itself is the story of Shri Ram, Punarvasu ki story. And it shows that you and your father will feel like a vagabond, will feel like what should I do in my life? From the age 18 till the age of 32, you guys will be kind of lost early in life. Irrespective of कि राहु या केतु का eclipse है कि नहीं, still you are gonna feel eclipsed about your purpose of your life. 18 से लेके 32, you and your father, because sun represents father as well, and it is representing your soul as well. So here, you and your father will go through many ups and downs till the age of 32, and these ups and downs are gonna start at the age of 18.
You guys will also travel a lot in this time period, different places, because Sri Ram traveled to south when he was sent in exile for 14 years. बनवास गए थे, राइट? तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा. कहाँ एक प्रिंस एक तरह से बेगर बन गए, जंगलों में रहना पड़ गया, राइट? So but he again got his kingdom back and he was on the throne. So it shows that after the age of 32, you and your father will be on a throne. You and your father will find your purpose of your life and will know कि क्या कर रहे हैं हम अपनी इस life में. But early on, yes, you guys will be kind of will be directionless early on, will feel like a vagabond. There are going to be success, failure, ups and downs in your life till the age of 32. Then if your sun is placed in the Vayu sign like Libra. So in Libra we have the nakshatra of Chitra, Swati and Vishaka. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Chitra. So Chitra is the nakshatra of Chitragupta and the Vishwakarma, celestial accountant and celestial architect. So it shows that you and your father can have interest, because this is the Libra sign. Libra is ruled by Venus. Venus is beauty, luxury. So you and your father can be interested into taking pictures, clicking selfies. And you guys can also be interested into wearing nice clothes, taking care of the body. Especially if you are a female and you have this Chitra nakshatra, you are quite beautiful. You're actually very beautiful. People say that, oh, I have Venus in the Pisces sign, especially in a Revati. My goodness, my wife is going to be beautiful. No, no, it's not going to happen like that. She will be beautiful, but more so when you have your Venus in Chitra nakshatra and even Venus debilitated in Virgo in Uttar Falguni, then we can say that yes, you will get a very, very beautiful wife. And even in Virgo Chitra, if your Venus is there debilitated, then also you're gonna get a very beautiful spouse. Venus exalted does not really give a beautiful spouse. It shows that your spouse is going to be like this Amma, Mother Teresa, who will love everyone. Her love is not selfish. Her love is for everyone. It's just not for her family. It's for everyone. Family को भी प्यार, but सभी को equally treat करना, सभी को equally love करना, like Mother Teresa. So an exalted Venus don't really give a very beautiful spouse. A debilitated Venus gives a very beautiful spouse, a very beautiful wife. So yeah, Sun in Chitra shows that you and your father can be very good in accounting, budgeting, can be good in and you and your father can have interest in bodybuilding as well, sculpting one's body, interest in virtual reality, VR. If your sun is placed in the sign of Vayu sign Aquarius. In Aquarius, we have the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak and Purva Bhadrapada. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Purva Bhadrapada. So you and your father are the people who are going to dig deep into things, dig deep into the occult things as well. जैसे tantra, black magic, white magic, astrology, occult, mysticism, tarot. ये चीज़ें थोड़ी dark है. ये चीज़ें हमारी जो है mainstream नहीं है. ये hidden है. तो इन चीज़ों के बारे में जानना, इन चीज़ों की तरफ क्लैरिटी लेकर आना, बिकॉज सन इज अ ग्रह विच विल गिव लाइट, विच विल गिव क्लैरिटी इन दिस एस्पेक्ट. सो इट शोज दैट you definitely you can have interest in astrology, occult, mysticism, and you want to bring more clarity in this subject for you. And you are a person, and father can be the person who will criticize the government no matter what. Even if the government did something good for the people, bought a very good policy, then also you're going to find some loophole and will say something negative about the government. So let's just get started. Yes. So यहाँ पर आपके लिए pile number 3. आपकी life का क्या purpose है, क्या destiny है? I hope this reading gives you clarity about your life, about your purpose of your life, destiny. यहाँ पर आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्पस से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, पाइल नंबर 3 का क्या पर्पस है. Alright, so we have 10 of Pentacles, having a family. Somehow your purpose of life is to have a stable family, stability in life, and we have 10 of Cups.
My goodness, it's actually about family. Some of you want a family, want 2-3 kids, and yeah, it's about family, taking care of the family, nurturing and nourishment of loved ones, children, Knight of Pentacles, and then we have the Chariot. Making decisions in your life. So what I feel is that because of the 10 of Pentacles, because of the 10 of Cups, very good cards, very good card. What I feel is that in the second half of your life, meaning the life after the age of 35, it's going to be quite smooth in terms of your family, smooth in terms of your love relationship. I know this is a general reading, but still बहुत अच्छे cards आए हैं. So I feel that you are going to be emotionally very fulfilled via your family. And I see children here, at least 2 to 3 children. And I feel a loving family here for you. Yes, because ये जो 10 of Cups है, it is showing that water here, एक running water. तो आप मुश्किलों से तो deal करोगे in your early life, but your life after marriage or at least after the age of 35-36 आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस करोगे, आपको अच्छी लगने लगेगी अपनी लाइफ. Actually your 20s, or I should say actually your 30s are going to be much better than your 20s. So that is something which I see. And ये जो Knight of Pentacles है, it is showing that early in life आप यूनिवर्सिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, इवन जॉब के लिए अपने होमलैंड से दूर जाओगे. स्पेशली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए अपने होमलैंड से दूर जाओगे, पढ़ने के लिए दूर जाओगे एक न्यू डायरेक्शन में. एंड द चैरियट इज ऑल्सो शोइंग दैट यू आर गोना चूज अ पाथ इन योर लाइफ, स्पेशली इफ यू आर इन योर 20s और यू आर अ टीनेजर. देयर इज गोना बी अ बिग life choice which is going to come. You have to choose. It's going to be a life changing choice you are going to make in your this lifetime. और हर लाइफ टाइम में हम कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चॉइस बनाते हैं, और इस लाइफ टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी चॉइस somehow I feel it's about your मैरिज अगेन. जो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 थी वो भी मैरिज से रिलेटेड थी, एंड दिस पाइल नंबर 3 is also about that marriage, about the family. What I see, you're going to be early on in your life, you're going to be really very passionate about your work, passionate about your career, passionate about your education. And later in life you have to choose कि आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो या फिर फैमिली पर. बट यू हैव टू मेक अ चॉइस हियर, एंड दिस इज अ चॉइस which is going to be life changing for you, because you are not going to go back in your career if you choose marriage. और अगर आपने करियर को चूज करा, you cannot go back into the marriage, because जो भी आपका करियर होगा काफ़ी रिक्वायर करेगा आपकी अटेंशन, एंड इवन दिस करियर विल मेक यू ट्रैवल टू डिस्टेंट फार अवे प्लेसेस. And I feel that you will choose the family above your career. Family comes first for you, pile number 3. And early on in life, if you are in, you are in your teenage, you are in your 20s, it can happen कि आप कहो कि मैं तो अपना career ही choose करूँगी. And yes, you are choosing your career here, but as you grow and mature, especially when it comes to marriage, you have to choose, you have to make a decision, and you are going to decide that marriage and family becomes really important for you. And the thing is कि आपकी लाइफ में एक टास्क होगा कि अपने you will raise your kids, you are going to raise your children, you are going to be this active father or active mother. And I do see कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो गोल ओरिएंटेड हो, जिसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल चाहिए, कुछ ना कुछ गोल चाहिए. अदरवाइज यू आर गोना फील डायरेक्शनलेस, यू आर गोना फील लाइफलेस. सो व्हाट आई सी दैट यू नीड अ पर्पस इन योर लाइफ, एंड अर्ली इन लाइफ योर पर्पस इज टू अर्न, योर पर्पस इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. एंड लेटर इन लाइफ व्हाट हैपन्स इज योर प्रायोरिटीज चेंजेस. कहीं ना कहीं आप जो हो फैमिली को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे, किड्स बच्चों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे. इट कैन हैपन दैट योर आत्मकारका, मून, अरुधा कैन बी एक्चुअली इन द 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन, और समहाउ जुपिटर इज कनेक्टिंग टू योर सन और इवन मून, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ चिल्ड्रन. आई सी कि चिल्ड्रन रियली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 3. एंड अर्ली इन लाइफ एज वेल, जब आप चाइल्डहुड में you could have many dolls with you if you are a girl.
इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपके पास काफ़ी सारी डॉल्स होती होंगी एंड यू वुड हैव प्लेड घर घर विद योर कजन्स और योर फ्रेंड्स. एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तब आप हमेशा ये सोचते होगे बचपन में कि मैं कैसे अपनी फैमिली बनाऊं और उस फैमिली को कैसे सस्टेन करूं, कैसे मनी लेकर आऊं, कैसे इनकम जनरेट करूं. और रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली चाहिए, क्योंकि मुझे अपने चिल्ड्रन चाहिए, बच्चे चाहिए. एंड दिस वॉज अ थॉट फ्रॉम योर चाइल्डहुड इटसेल्फ. मतलब बचपन से आपने ये चीज़ सोचनी शुरू कर दी थी दैट यू नो व्हाट, समडे आई एम गोना गेट मैरिड एंड समडे आई विल हैव माई ओन किड्स. एंड आई नो इट कैन बी लाइक एक सिंपल नॉर्मल थॉट, बट ये जो थॉट है ये आपकी लाइफ में काफ़ी महत्व रखता है. मतलब काफ़ी बड़ा ये आपके लिए थॉट है. And you want to fulfill this desire of yours to have children and to provide for them. Early on in life, you will be very career oriented and goal and having those money goal, investment goals. But later you are a person who would want to be with family, who want to be active with their kids. Sports festival या sports की कोई चीज़ है उनके स्कूल में, तो वहाँ पर उनको cheer up करने जाना. Being an active father or active mother, I can see that here. यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए और क्या इंफॉर्मेशन है? द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ पर्पस, डेस्टिनी. वी हैव द हाई प्रीस्टेस हियर अगेन, शक्ति. And high priestess is like the goddess of Kali here. And we have the third eye also. What I see is that again it's about the female energy, it's about Prakriti, it's about, again it's the goddess of destruction as well. Kali is the goddess of destruction, but she destruct to construct something new. So here as well it's more of a feminine energy. Even if you're a male watching this reading, you have this feminine touch to yourself and definitely shows that you are quite intuitive in nature. आपको पता लग जाता है कि my kids wants me or something or the other. आपकी intuition काफ़ी ज़्यादा strong है. The third eye is the eye of knowledge as well, clarity as well. So somehow you are gonna be quite clear in your life about that what I want and what I do not want. Of course when we are young तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या decision लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या इस चीज़ का outcome होगा. बट एज यू ग्रो एंड मेच्योर, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है. एंड यू बिकमिंग दिस वाइज पर्सन इन योर लाइफ, जो दूसरे लोगों को काफ़ी एडवाइस और काउंसिल भी कर सकते हैं. बट आई सी दैट यू आर बिकमिंग दिस प्रोटेक्टिव मदर और फादर एज वेल. यू गाइज विल प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन नो मैटर वॉट. यू आर गोना बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर चिल्ड्रन. यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ की डेस्टिनी, लाइफ के पर्पस के बारे में. Okay, life purpose, life destiny, pile number 3. Okay, we have trust here. All right. I feel that you trust the universe कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है. आप इतना क्वेश्चन नहीं करोगे in future कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. You are gonna be satisfied again. Then we have will power. आपकी will power काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर strong है. Again I'll come to this. Then we have happiness. Again जैसे मैंने happiness का कार्ड जो है ये देखा, I just felt कि वही बचपन वाले जो कलर्स नहीं होते, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ये जो कलर्स होते हैं, बिकॉज कलर चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड बड़ा कलरफुल होता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट जो ये ट्रस्ट कार्ड है, इट इज़ डेफिनेटली शोइंग दैट यू आर गोना ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू गोना ट्रस्ट योर गॉड, यू आर गोना ट्रस्ट गॉड, यू आर गोना ट्रस्ट your partner that he's going to be or she's going to be there for you. You're going to trust your children. जैसे हमने इतना सारा टाइम अपने बच्चों की तरफ लगाया है, इन्वेस्ट करा अपना टाइम, तो इन फ्यूचर माई चिल्ड्रन आर गोना बी विद मी. They are gonna be with me. If I was there for them, my children are gonna be there for me. आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो. कई बार हम कहते हैं ना कि लाइक if I have to give an example, then when I was in my 11th class, तो उस टाइम पर मैं स्कूल में अपना फ़ोन लेकर ज़रूर जाती थी, बिकॉज़ मैं रेडियोलॉजी में थी, तो स्कूल से हमें डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना होता था टू स्टडी कि एक्सरे कैसे करना है, MRI CT स्कैन कैसे करना है. तो
अगेन मेरी जो एजुकेशन है इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू मेडिकल. सो यहाँ पर आई स्टडीड रेडियोलॉजी. तो स्कूल से हॉस्पिटल जाना होता था, तो हमें स्कूल छोड़कर जाना होता था, और इन बिटवीन तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट रियली सेफ. अगर फ़ोन साथ है तो ट्रैक हो सकता है फ़ोन, या आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकते हो. बट स्कूल में जो है टीचर्स ने कहा था कि छुपा के रखना है फ़ोन, ऐसे स्कूल में अलाउड नहीं है. समहाउ मेरा फ़ोन पकड़ा गया और फिर उसके बाद मेरे फादर को बुलाया. My father took my side, and the teachers were like, oh my goodness, ये बच्चे के फादर, अक्षता के फादर अक्षता की साइड ले रहे हैं, क्या फादर है ये. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम जो पेरेंट्स थे वो टीचर्स की साइड ज़्यादा लेते थे, वेयर एज माई फादर टुक माई साइड दैट माई चाइल्ड इज़ परफेक्ट, शी हैजंट डन समथिंग रॉन्ग, ही टुक माई साइड. He didn't really listen to the teachers. So now again the thing is, you trust your children like that. No matter what, आप उनकी बात पर हमेशा विश्वास करोगे, क्योंकि आपको अपनी परवरिश, आपने जो उनकी अपब्रिंगिंग करी है, उनकी जो परवरिश करी है, उस पर विश्वास है, तो आप अपने बच्चों पर हमेशा विश्वास करोगे. So that trust, that strong trust is there. It's there. And we also willpower. जब आप, as I've told you, you have goals in your life and you have a strong willpower to complete those goals. तो जैसे ही आपके करियर से रिलेटेड गोल्स खत्म होते हैं, when you enter your गृहस्थ आश्रम, which is गृहस्थ मीन्स के गृहस्थी, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं, राइट. जब आप वहाँ पर एंटर करते हो तो आपकी विल पावर इज़ टू डू द गुड अपब्रिंगिंग फॉर योर चिल्ड्रन, उनको अच्छी परवरिश देना. तो वो आपकी विल पावर है कि आप उन्हें अच्छे से हर चीज़ समझाओ, क्या गलत है क्या सही है. एंड देन वी हैव द हैप्पीनेस एज वेल. यू आर गोना बिकम द स्ट्रिक्ट पेरेंट अर्ली ऑन इन योर चिल्ड्रंस लाइफ, एंड एज दे ग्रो मैच्योर, एज दे बिकम टीन्स, यू बिकम देयर फ्रेंड, you understand them, and that is like very beautiful. I mean, pile number 3, this is a beautiful pile which I also want to live. This is such a beautiful pile because there is this happiness from the career. Will power strong है career के लिए भी, and when you enter your गृहस्थ आश्रम, meaning when you enter your marriage, when you have your own home, have your own children, so you invest your time in them, you invest your energy in them, you trust them, you make them something in their life, and you are happy about it. You are getting happiness through your children. Of course spouse से भी happiness है, but more so it's about children. It's about your children. आपका focus अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है. A very beautiful pile. यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए. All right, so we have eagle. See from a higher perspective. I mean, the thing is, of course, it's a guidance कि दूरदृष्टा बनना है, दूरदृष्टा बनना है. ईगल की नज़रें कितनी तेज़ होती है, दूर से ही अपना जो है शिकार ढूंढ लेता है ईगल. कितनी तेज़ नज़रें हैं, दूरदृष्टा है. तो यहाँ पर भी हायर पर्सपेक्टिव, दूरदृष्टा बनना है, आगे की सोच कर चलना है. अभी प्रेजेंट में भी जीना, पर आगे के लिए भी थोड़ा यहाँ पर प्लान करने की आपको ज़रूरत है. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है फॉर यू पाइल नंबर 3. All right, so we have green man, synergy. It's also about creativity. It's also about looking things at a, in different manner. This card wants to come out. We have release card as well. So what I see is that कि आप ग्रजेस जो अगर आप होल्ड करते हो, ग्रजेस अगर आपके मन में है, तो आप उन चीज़ों को जल्दी रिलीज भी कर दोगे. somehow when you have your own children, तो आप अपना चाइल्डहुड फिर से जीते हो, वो जीने का आपको मौका मिलता है. एंड यू रियलाइज मैनी थिंग्स, यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल रेजिंग योर ओन किड्स. आप क्रिएटिविटी में, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो बढ़ रही है यहाँ थ्रू योर चिल्ड्रन. और यहाँ पर जो भी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें जो
पास्ट में जो कुछ भी हुआ, हर किसी के साथ हर कोई जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ों से गुजरता है लाइफ में। तो नेगेटिव चीज़ों को आप रिलीज़ करना शुरू कर दोगे, आप जो हो माफ़ करना शुरू कर दोगे, फॉरगिव करना शुरू कर दोगे, जो कि अगेन आपको स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा। और चिल्ड्रन जो है आपकी लाइफ में पेशेंस लेकर आ रहे हैं, और जो ग्रजेस थे लोगों के अगेंस्ट, वो अब जो है आप रिलीज़ करोगे इन योर लाइफ थ्रू योर चिल्ड्रन। तो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग हियर। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, गाइडेंस कार्ड। All right, so we have lady, enjoy growth and reap rewards. Again, it's about the feminine energy, female energy, which is about nurturing, जो कि आप कर रहे हो. You're nurturing your dreams, your career, and then your kids. And I also see, because it's about the fruits as well. तो ये जो पेड़ है, पहले ये सीड था, फिर उसके बाद आपने इसमें पानी दिया, सनलाइट आई, फिर कुछ और न्यूट्रिएंट्स डाले, देन इट बिकेम अ स्मॉल प्लांट, बिग प्लांट, फिर ट्री बना, और फिर उसके बाद उसके फ्रूट्स है, और वो फ्रूट्स आप फिर इंजॉय करते हो. सेम गोज हेयर विद द चिल्ड्रन एज वेल. तो आप अपने बच्चों को गाइडेंस देते हो. इन फ्यूचर दे आर गोना बी देयर फॉर यू व्हेन यू आर इन नीड, बट फर्स्ट आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनको सही गलत सिखा रहे हो. इट्स ऑल अबाउट लाइक मदरहुड और फादरहुड. दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स अगेन. उनके साथ जो है उनकी अपब्रिंगिंग करो, एंड देन व्हेन दे आर इन अ एज जहाँ पर वो आपको और आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन दे बिकम गुड फ्रेंड्स विद यू. And that's actually very beautiful. You're gonna be a great mother or father. Pile number 3. Great mother and father. Alright, so this was the information coming from tarot. Do let me know what you think about this in the comment section. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 4. So this is your reading. You chose the white crystal here. And you chose this because you got attracted towards it, or your sun is placed in the water signs, the signs like Cancer, Scorpio, or Pisces, the jealous sign. So let's say your sun is present in the Cancer sign, and in Cancer we have the nakshatras like Punarvasu, Pushya, or Ashlesha. So let's say your sun is placed in the Pushya nakshatra. So Pushya itself is the nakshatra of Jupiter. I mean, the mythological story of Jupiter is in Pushya nakshatra. Pushya is ruled by Saturn, but the deity of Pushya is Jupiter. So in Pushya, if your sun is placed, you and your father love to eat products which are made from milk, buttermilk, ghee, and paneer is your favorite. You guys love paneer. Any product any food which is prepared from milk, you love these things, you love those products, and you are the people who can be great foodies. You are the people who are the foodies. Even if you and your father are ill and you have a reservation at a restaurant, your favorite restaurant, you are gonna just take medicine and will go and will have food. And you guys are also great teacher, preacher, advisor, counselor, because Jupiter is the teacher, preacher, advisor, counselor. He is the advisor to Surya, advisor to the king. So it shows that your father is an advisor, a consultant, or he's a teacher. He teaches other people no matter what. And you, because your sun is also in the nakshatra of Pushya, you're also going to teach. You're also going to counsel other people no matter what your job is. Let's say your sun is placed in the sign of Scorpio. Scorpio, we have the nakshatras like Vishaka, Anuradha, and we have the nakshatra of Jyeshtha. So here, let's say your sun is placed in the nakshatra of Anuradha. So you and your father can be Krishna devotees, go to ISKCON temple, will read Bhagavad Gita in your life no matter what. Especially, it does not really matter what religion you are from, but you will read Bhagavad Gita in your life once at least. You guys will also have very good friends or very toxic friends, but as you grow and mature, you will have friends who are going to be the best friend. Even your father, because sun represents the father. So your father can even have very good friends in his life, very good friends in his life. And it shows that you guys can even have some pipeline issue in your home,
Always check your pipelines after 2 years. Don't just see कि अरे ये tap work कर रही है कि नहीं. No, check the pipelines. Because there will be some blockage in your pipelines, and when you just get it fixed, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आता हुआ देखोगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आपकी तरफ ज़रूर आएगी. Let's say your sun is placed in the nakshatra, or I should say sign of Pisces, and we have in the sign of Pisces we have Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. Let's say your sun is placed in the Uttara Bhadrapada nakshatra. So Uttara Bhadrapada is a nakshatra of Ahir Budhyana, and it's again about Uttara Bhadra is about climate. Like the nakshatra of Ardra, Purva Bhadrapada and Uttara Bhadrapada, ये जो तीनों नक्षत्रास हैं, it's actually about climate. Many people who have Ardra nakshatra actually are storm chasers or work in climate, and Uttara Bhadrapada and Purva Bhadrapada are also somehow connected to climate. And if like 5 to 10 people, even Uttara Bhadrapada or Purva Bhadrapada people stand in a line, they can even bring rains. It's actually true, they can even bring rains. If they start chanting some mantras, if they start thinking about rain, they can actually bring rain. Uttara Bhadrapada, Purva Bhadrapada have that capacity. Especially because Uttara and Purva Bhadrapada represents the lightning. Bijli चमकना उसको रिप्रेजेंट करता है. स्पेशली दीज आर ऑल्सो नक्षत्रास अबाउट कुंडलिनी अवेकनिंग. जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, पूर्व भद्रपदा थोड़ा शॉक से गुजरता है जब उसकी कुंडली अवेकन होती है. वेयर एज जो उत्तर भद्रपदा वो शॉक से नहीं गुजरता, वो मज़े से जो है अपनी कुंडली अवेकन करता है. बट येस, ये जो दो नक्षत्रास है, आई डू नॉट रियली लाइक टू जस्ट टॉक अबाउट इट as much as I like to talk about different nakshatras. And many of you guys have also written in the comments somewhere in different videos that you never really talk about Uttara Bhadrapada. Why it's that so? Because these are one of the karmic and chaotic nakshatras, very chaotic nakshatras. And the thing is, as we talk about these nakshatras, they actually plays out in that astrologer's life and can bring heavy karma to that astrologer. So we avoid some nakshatras, and we avoid even retrograde planets to talk about, because again retrograde planets are karmic things. Pending karma, retrograde planet, and the nakshatras like Uttara Bhadrapada, you would have seen this, many astrologers don't even talk about these things. So we try to not talk about such nakshatras and pending karma and even retrograde planets. We avoid these things. बट येस, इन पर्सनल कंसल्टेशन एक पर्सन को ही हम वो चीज़ बता रहे हैं तो इतना कार्मिक बोझ नहीं चढ़ता है, इतना ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ज़्यादा बनता है. बट येस, बिकॉज नाउ एवरी वन इज़ लिसनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो वी हैव टू बी केयरफुल हेयर. बट येस, विद Uttara Bhadrapada, what we can predict is that you and your father will be the people who will love to be near water. एक्वेटिक लाइफ में इंटरेस्ट रखना, फिशेस, क्रूज पर जाना, लव फॉर म्यूजिक एज वेल. एंड दिस नक्षत्र विल ओपन द गेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर यू एंड योर फादर एट वन पॉइंट इन योर लाइफ. लाइक इट विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो दैट्स देयर. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. जो आपका पर्पस है लाइफ का, डेस्टिनी है लाइफ की, वो क्या है? आई होप दिस रीडिंग ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ. ऑलराइट, सो वी हैव द हेरोफेंट हियर. ओके, इस कार्ड के लिए एक और कार्ड भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये कार्ड ऑर्थोडॉक्सी को भी रिप्रेजेंट करता है. बट इफ द अदर कार्ड इज अनऑर्थोडॉक्स, देन being rebellious when it comes to orthodoxy. We have Ace of Wands. Okay, you're gonna rebel here. You're gonna rebel against the norms and the regulations of society. You can even criticize the education system of India. And Four of Pentacles shows your money and save karna. Money को सेव करना, इन्वेस्ट करना. Then we have the Fool card here. Pile number 4. What I feel is, first of all, you are gonna break the norms, rules, regulations of the society.
first and foremost, you are gonna break the rules and norms because somehow you feel कि अब जो है वक्त बदल गया है तो रूल्स और रेगुलेशंस भी बदलने चाहिए. You are a person who will bring change and transformation in the society. आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिलेगा अपनी लाइफ में बिकॉज आपके इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से और जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आपका सोच विचार है, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा. अर्ली इन योर लाइफ लाइक योर टीचर्स, मेंटोर्स, आप उनको ज़रूर क्वेश्चन करोगे, उनकी टीचिंग्स को ज़रूर क्वेश्चन करोगे यहाँ पर इन योर लाइफ. एंड आप अपना बिलीफ सिस्टम यहाँ पर बनाओगे. इट कैन इवन हैपन यू हैव जुपिटर एंड राहु कंजंक्ट टुगेदर. जुपिटर इज अर विजडम, राहु इज अनऑर्थोडॉक्स, outcast. So your wisdom is like of an outcast. You can even have your sun in Ashlesha, which is again going to give that unorthodoxy in your mind. You are a person who's very innovative, who wants to bring a change in the society. And here somehow, because we have the Fool energy, so your ascendant can be ruled by Mercury. You can have Virgo or Gemini ascendant even. And the Fool card is of Mercury. Mercury is always curious. If you know, English में एक term है, एक word है being mercurious. Mercurious. तो mercurious है चुलबुला होना और हर चीज़ को जानना, क्रियोसिटी रखना. तो आप हर चीज़ को जानना चाहते हो. यू कैन बिकम मास्टर, यू कैन बिकम that jack of all trades and master of none, and you like it. You want to become jack of all trades and master of none. You like it that way. आप मास्टरी करना एक चीज़ में, ये शायद आपका मकसद ना हो. आपको हर चीज़ के बारे में जानना है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. योर लाइफ पर्पस इज टू एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी. Is actually to bring a change in the society. Some of you can even become IAS, IPS officer, can clear UPSC, and then you bring that change. But more so, I do see some of you becoming entrepreneurs, some of you owning your own business. Some of you will even travel because of your education to foreign distant land. And when you go from India to Western countries, of course वो change आप देखते हो कितना ज़्यादा culture में, कितना ज़्यादा language में, mentality में change है. और when you again come back to your own homeland, you're like, my goodness, you have to be open-minded and this and that. So कहीं ना कहीं tradition culture से अलग होना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. And somehow you will get criticized because of that. And your purpose, your destiny of your life is to follow your heart, to follow your passion, and becoming that jack of all trades. And Four of Pentacles also shows pile number 4 that you will invest your money very carefully. You're going to be quite anal about your money कि मेरा money जा किधर रहा है. That is something which I'm seeing here. यहाँ पर आपके major arcana से क्या information है? We have the world here. As I've told you, you're going to travel, and as of again जो India से Western countries में जाना, traveling the world, getting to know different culture, different people, तो आपका exposure जो है हुआ है, मतलब दूसरे culture के through. I mean, you got exposed to different culture, different belief system. So now you have broadened your own horizons. और यहाँ पर वर्ल्ड ब्राह्मण. सो हेयर वी हैव द लोटस एज वेल. जो ब्रह्मा है उनको लोटस पर दिखाया हुआ है. This signifies knowledge. So you will have knowledge, you will have wisdom, you will have that information about everything. You will know everything, but of course you won't be able to master everything. but आपके पास information हर चीज़ की यहाँ पर होगी. आप काफ़ी ज़्यादा exposed हो different culture से, tradition से, बिलीफ सिस्टम से, तो आपका जो होराइजन है सोच विचार का, वो काफ़ी बड़ा है, ब्रॉडेंड है. एंड आई सी दैट यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, बट कैन गेट क्रिटिसाइज्ड इन योर ओन होमलैंड बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, द नॉलेज यू हैव. यहाँ पर जो है आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है फॉर योर सोल्स पर्पस, डेस्टिनी. ओके, we have forgiveness here. Okay, you have to forgive and forget here. आपको वो bigger, better person यहाँ पर बनना है. This card also wants to come out. Then we have friendship. You can even have friends from different culture, different countries.
That can even happen. And I feel that you're gonna give more importance more to your friends than your family. And then we have the courage card as well. What I see, what I feel again here is that because we have the card of forgiveness and friendship, you can have a dominating Anuradha nakshatra, and Anuradha itself is the nakshatra of Mitra. So your sun, your moon, your Atma Karaka, your Arudha, your Lagna can be in the nakshatra of Anuradha, which is about having friendships. मित्रा का नक्षत्र है. मित्रा के कौन कौन से फ्रेंड्स थे? वरुणा, द लॉर्ड ऑफ डार्क स्काई, एंड ही ऑल्सो हैड वन फ्रेंड फ्रॉम उत्तर फैलगुनी. आई थिंक इट वॉज भागा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई हैव टू चेक द mythology. बट yes, it was, I feel मित्रा का भागा and Varuna were the two friends. So basically what I want to say is that you are going to give more importance to your friendship more than your family. You are a person who will give more importance to friends more than your blood relationships. And the thing is that you have, big heart here. अगर कुछ चीज़ें गलत होती भी है तो you forgive other people. और आप जो हो ईगो भी नहीं रखते हो, आप माफ़ी मांगने में विश्वास करते हो. मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर, इस चीज़ पर विश्वास करते हो. ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएगी. एंड वी ऑल्सो हैव द लायन हियर, द करेज कार्ड हियर. यू आर ऑल्सो करेजियस टू पुट योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. Like you are not a person जो डरेगा या who will be afraid to put one's point in front of everyone. You are going to be quite open कि you know what, I believe in this and this is my belief system, what do you say? So you are going to be very open to new ideas, and that's why you are prone to criticism. बट आप अपना पॉइंट बहुत असर्टिव वे से बट स्टिल जेंटलनेस से रखते हो. बट यू विल गेट ऑपोजिशन इन योर लाइफ. यू विल गेट क्रिटिसाइज्ड बाय योर गुरुज, मेंटोर्स, फादर इवन, एंड ओल्ड वाइज पीपल, बिकॉज यू हैव योर ओन बिलीफ सिस्टम एंड यू वॉन्ट टू फॉलो दैट ओनली. ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है. थोड़ी रिबेलियस एनर्जी भी है यहाँ पर. यू विल डेफिनेटली रिबेल अगेंस्ट योर पेरेंट्स बिलीफ सिस्टम, स्पेशली अगेंस्ट योर फादर्स बिलीफ सिस्टम. यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है? All right, so we have elder here. It says move beyond ancestral patterns. As I was telling you, like अभी मैं यही बात कर रही थी that you're going to be criticized by your elders. You're going to be, rebellious. You are going to be rebellious. You're going to rebel against the norms and regulation, belief system of your family, elders के belief system से. और यहाँ पर भी guidance है move beyond ancestral patterns. You are going to move definitely beyond your ancestral patterns. You are destined for that. You are going to move forward in your life with a different belief system, with a different mindset. और अपने ancestral pattern और अपने ancestral pattern से different चीज़ आप यहाँ पर करोगे ही करोगे. यहाँ पर और क्या guidance है, और I should say और क्या information है. Actually मैंने ना अभी ये वाला कार्ड देखा था. Like I should pull this card because मैंने अभी कार्ड देखा है. It will have some meaning for you for sure. And here as well we have ancient healing wisdom, shaman, which is again about elders, and you are gonna again rebel against the norms and regulations of society. Orthodoxy आपको बिल्कुल पसंद नहीं, you are gonna rebel against it just like this Hierophant energy. क्या information है यहाँ पर? Okay, we have this card, dragonfly. Emergence. So what I see is that you are gonna like a dragonfly, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. मुझे तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पता है थोड़ी बहुत. सो अ बटरफ्लाई पहले वो एक I think if I'm not wrong it is a larva and then it has a cocoon, और उस cocoon से जो है फिर बटरफ्लाई निकलती है. सो बहुत सारी स्टेजेस है बेसिकली. तो ड्रैगन फ्लाई की भी बहुत सारी स्टेजेस होगी. तो आपकी लाइफ में भी उसी तरह बहुत सारी स्टेजेस है, जिन स्टेजेस से आप गुजरोगे और बहुत कुछ लर्न करोगे. और जब उन स्टेजेस से आप गुजरोगे और बहुत कुछ लर्न करोगे और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप अपने लिए लोगे. इट्स नॉट कि आपने गूगल करा, इंसाइक्लोपीडिया खोला, विकीपीडिया खोला और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपने ली और उसे याद करा. नो, ये आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे आप लर्न करोगे अपनी स्टेजेस पर. मतलब अपनी चाइल्डहुड स्टेज पर, अपने यंग एडल्ट स्टेज पर, फिर अपनी 30s में जो स्टेज है उस टाइम पर आप क्या लर्न कर रहे हो. तो यहाँ पर जो है
it's like life for you is actually अ स्कूल. लाइक आपकी लाइफ जो है एक तरह से स्कूल है. इट्स नॉट कि आपने पढ़ाई करी, ग्रेजुएट हो गए तो कभी स्कूल गए ही नहीं, फिर कभी कुछ लर्न नहीं करा. नो, एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. पाइल नंबर 4, एंड यू आर गोना लर्न समथिंग एवरी डे इन योर लाइफ, एंड यू आर गोना बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे इन योर लाइफ. जो पर्सन आपसे 2 साल पहले मिले थे, वही पर्सन जब आपसे 2 साल बाद मिलते हैं, वो देखेंगे कि आप में कितना बड़ा चेंज आ चुके हैं इन ही 2 सालों में. और ये हर टाइम होता है. हर रोज़ आप बदलते हो, हर रोज़ आप जो हो बदलते हो, चेंज होते हो, अच्छा चेंज अपने अंदर लेकर आते हो. 2 साल बाद आप बिल्कुल ही बदल जाते हो. 5 साल बाद आप और भी आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है. तो वो चेंजेस आप में आ रहे हैं. आप एक ही बिलीफ सिस्टम पर नहीं अटके हुए हो, आप में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूसली. यहाँ पर और आपके लिए क्या गाइडेंस है? All right, so we have great teacher, learn from spiritual experiences. Again, we are talking about experiences. We have great teacher as well. So it definitely shows, as I've told you, if your sun is in Pushya nakshatra or any other planet in the nakshatra of Pushya. Pushya is the nakshatra of Jupiter, Brihaspati. The deity is Brihaspati. The ruling graha is Saturn, but the deity is Brihaspati, which is, I mean, he is a teacher, preacher, advisor, counselor. He is the great teacher of Devas. So here it definitely shows that you are going to become a great teacher in your life for your students. You will have many children. It can happen कि you literally have many children, biological children, but it also shows that you will have many students जिनको आप अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हो. आप एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे एडवाइज़र और काउंसलर अपनी लाइफ में बनोगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों से ऑलरेडी गुजर चुके हो. तो अगर कोई और पर्सन जो है उन्हीं मुश्किलों से गुजरता है और वो आपके पास सोल्यूशन देने के लिए आता है, तो आप उससे सबसे अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि आप उन्हीं सिचुएशन से पहले निकले थे. अगर कोई पर्सन उस सिचुएशन से निकला ही नहीं है, वो क्या एडवाइस देगा? वो दे ही नहीं सकता एडवाइस. वेयरएज आप उन सिचुएशन से निकल जाओगे जो दूसरे लोग निकलेंगे अपनी लाइफ में, और आपके पास उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज़रूर होगा, तभी आप उन्हें वो सोल्यूशन दे पाओगे. So you become a great teacher, great advisor, and a great counselor as well, a motivator. I mean, you can even give motivational speech when you are in your 30s or in your 40s. So this is something which I'm getting, and somehow your purpose of life or destiny is somehow also related to teaching, advising, counseling. You can even become a financial advisor, or you can even become a life coach here. So that can even happen, or you can even become an astrologer or a tarot reader. That can even happen. But what I see is, because यहाँ पर जो है, if you even become an astrologer, you are gonna become an astrologer जो बहुत ज़्यादा अपने अपने एजुकेशन में, एस्ट्रोलॉजी के एजुकेशन में काफ़ी मॉडर्न है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, 4th हाउस शो करता है हमारी मदर को, हमारे घर को, हमारे रेजिडेंस को. एक मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजर है, वो अगर आप बनते हो एक एस्ट्रोलॉजर, देन यू विल से कि 4th हाउस हमारी कन्वीनियंस का हाउस होता है, हमारे कार्स का, व्हीकल्स का हाउस होता है. हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उस पर लिखा है 4th हाउस जो है वो पहले के ज़माने में जैसे ट्रांसपोर्टेशन मेथड था उसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें वो वाले मेथड लिखे हुए हैं. पहले के टाइम पर कार, बस, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन नहीं होता था, राइट? सो यू आर गोना बिकम दिस एस्ट्रोलॉजर हु इज़ गोना बी वेरी मॉडर्न इन देयर टेक्निक्स. 4th house will not just represents mother or residence home, but it also that astrologer, if you become an astrologer, pile number 4, you will say that 4th house is of conveniences, is about vehicles, it's about land and real estate, and it's also about psychology. So आप उनमें वो modern concepts लेकर आओगे, and that's actually very beautiful here, very very beautiful, and you're going to help many people through your wisdom. So this is something which I'm getting for you, pile number 4, and yes, that was your reading. Do let me know in the comment section what do you think about this pile, how it resonates with you and everything. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.